गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवर टुडे टॉपिक इज़ द लेंथ स्केल। पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था नैनो साइंस, यानी कि उसकी इंट्रोडक्शन। नैनो साइंस क्या है, नैनो वर्ड कहाँ से राइज हुआ और ये किसने डिस्कवर किया, नोबेल प्राइज़ की साइंटिस्ट ने जीता, ये हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा है। तो अब हमारे पास जो आर्टिकल है दैट इज़ द लेंथ स्केल। लेंथ स्केल क्या है, दैट इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द प्रोसेस ऑफ द मिनिएचराइजेशन फ्रॉम द माइक्रोन मीटर स्केल डाउन टू द नैनोमीटर स्केल। यानी कि इसमें लेंथ स्केल क्या है कि बहुत ही मिनिमाइज जो है उसको हम माइक्रोन मीटर स्केल से डाउन नैनोमीटर स्केल तक लेके जाएंगे। तो 1 नैनोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट टू द 5 सिलिकॉन एटम्स और ए 10 हाइड्रोजन प्लेस्ड इन ए line when one goes down from bulk size to the micron meter scale. Physical properties of the material remains almost same. In the nanometer scale, the physical property of the materials changes drastically. As one has moved from macroscopic world to microscopic world to length scale also change the accordingly. तो हमारे पास जो टेबल है, इस टेबल में हम बात कर रहे हैं बल्क मटेरियल है, फिर हमारे पास माइक्रो वर्ल्ड है, फिर हमारे पास क्या है नैनो वर्ल्ड यानी नैनो पार्टिकल्स। तो इसी तरीके से हमने जो फिगर रिप्रेजेंट किया उस फिगर में क्या है कि जो हमारा मिड पॉइंट बीच में क्या है दैट इज़ द रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ से हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे ह्यूमन का साइज़ कितना है, साइज़ ऑफ फ्लाई कितना है, हेयर ऑफ डायमीटर कितना है, रेड ब्लड सेल्स क्या हैं, वायरस, डीएनए और नैनो ट्यूब्स या हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हमारे पास क्या है, उनके साइज़ दिए हुए हैं कि इतने साइज़ इस पार्टिकल की हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही लेंथ स्केल के अंदर दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नैनो स्केल। ये जो हमने नैनो स्केल की जो फिगर रिप्रेजेंट की है इसका जो इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट क्या है, वो क्या है कि नंबर वाइज हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे क्रिस्टल्स इन द नैनोमीटर स्केल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, या लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, क्रिस्टल इन द नैनोमीटर स्केल हैव द रिड्यूस लैटिस कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, फेरो इलेक्ट्रिक एंड द फेरोमैग्नेटिक में लॉस देयर ferroelectricity and the ferromagnetism in the nanometer scale. Now the fourth point, bulk semiconductor changes into the insulator in the nanometer scale. Now next is the energy level of the metal changes when the number of atoms of the material is reduced. That is the last point is the reactivity of the bulk material is different reactivity of same material reduced to nano scale. नाउ नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। हिस्ट्री एक ही हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, इट इज़ नॉट क्लियर व्हेन द ह्यूमंस फर्स्ट बिगिन टू मेक nano size material. It is known as in the 4th century AD Roman glass makers were the fabricating glass containing the nano size metals. Nanotechnology is new, but research on a nanometer scale is not new at all. The study of the biological system of the engineering of many materials have been in the nanometers regime for the centuries. For example, Chinese are known as to use the gold nanoparticles as in inorganic dye, introduce red color into their ceramic porcelain more than the 1,000 years ago. Some fact to be noted फॉर द एडवांस ऑफ द नैनो साइंस। तो इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट इन द इन 1661 द रॉबर्ट बॉयल suggests that the teeny particles of the matter combine in the various ways to form the corpuscles. 1861 J.C. Maxwell produced the first color photograph. In the photography, silver nanoparticles sensitive to the light plays an important role. In 1857, Michelson Faraday attempted to explain how the metal particles affect the color of the church windows. Now, in 1960, the Richard Feynman, during the lecture at the meeting of the American Physical Society, the postulate of the possibility and the potential nano size materials. He proposed to the manipulated individual atoms to make new small structures having very different properties. However, it was not until 1980
with the emergence of the appropriate method of the fabrication of the nanostructure, that the notable increase in research activity occur and number of the significant development result. The current widespread interest in the nanotechnology date back to the year 1996 to 1998, when the panel under the suspicious of the World Technology Evaluation Centers, founded by the National Science Foundation and the other federal agencies, undertook a worldwide study of the research and the development in the area of the nanotechnology. This was done for the assessing the potential of the nanotechnology of the technological innovation. The research area of the nanotechnology is interdisciplinary, covering a wide variety of subjects ranging from the chemistry of the catalyst of nanoparticle to the physics of the quantum not laser. This is the history of the nanotechnology, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आल्सो द स्केल, इसमें स्केल भी पूछा जा सकता है कि इस पार्टिकल का कितना लेंथ स्केल है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.